Our next session will be moderated by Mansi Kumar and Mr. Anil Jalali. Mansi is the founder of Mana Arts, which specializes in art, specializes in candles. She is also an honorary advisor in social marketing with Bodhi Tree Foundation on social causes and education of underprivileged children. While Anil Jalani has been writing since childhood, mainly poems and short stories. His hobbies and interests apart from writing are reading books, storytelling, working with children for their holistic development and spirituality. So before I hand over the mic to these guys, I would like to congratulate Anil for his new book launch. So over to you guys. Thank you so much, Ashmit. Anil, are you there with me? Absolutely. Thank you so much, Ashmit. Thank you for congratulating me. Thank you so much. So, Mansi, should I start? Yes. Before you say something, I would like to say 2 members of Noida Toastmasters are honored to be part of Phoenix Club, which has this festival. With this, I would say, Anil, please start this section. Thank you. Thank you, Mansi. A real privilege to have this storytelling session for children under the aegis of Phoenix Club. I think we are all the more privileged to have these wonderful children coming onto the stage and speaking for us. These children coming onto the stage of Phoenix Literature Festival is like a star on our head. These children make our day. These children are the future of India, and giving an opportunity to these children to express themselves freely through stories and poems and book reviews, I think it is a wonderful opportunity. So I'd like to clap and kindly clap for the children who will be coming onto the stage for speaking, storytelling. I think it is a wonderful opportunity for them. So without wasting any time, I would call on screen a very wonderful and a very talkative girl by the name of Priyanshi Baisoya. She is studying in class 8th. Priyanshi Baisoya, the stage is yours. Thank you, sir. Okay. Good evening, everyone. This is me, Priyanshi Baisoya, from Lotus Valley International School, Noida. And today, I'm giving you a review of an amazing book named as Around the World in 80 Days, which is an adventure novel by a famous French writer named as Jules Verne. And this book was originally published in French in the year 1872. The story is all about a wealthy gentleman from London named as Phileas Fogg and his emotional valet named as Passepartout, and they are in an unflappable journey around the world in 80 days or less. But do you know, this journey was just because of a bet that serves a wager of 20,000 pounds. Isn't it amazing? Believe me, there is more than money at stake in this remarkable tale of Jules Verne. And before I end, I want to say that what's the role of Detective Fix? If you read this book, do find out. Thank you so much. Thank you, Priyanshi. Now, the second candidate is Amisha Talwar. Amisha is a student of class 7 and she is giving a book review. Amisha, are you there? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. A very good evening, ma'am, and everybody. This is Amisha Talwar from class 7, Kamagya, Noida. It's a pleasure to be in the litfest. So today I'm going to review a book from the book series Roald Dahl. The name of the book is Matilda. A little girl who lived in England named Matilda. She lived with her parents and brother Michael.
Michael was a favorite child. He got all the love and attention of his parents. She lived with her parents and brother Michael. Michael is the favorite child. He gets all the love and attention and even a good school. But Matilda didn't. She didn't because her parents were jealous and selfish. Omisha, please carry on. Don't get worried. Please carry on. You can read from the script also. Not an issue at all. Not an issue at all. A very good evening to one and all present here. I am Omisha Talwar from class 7 Thamagya, Noida. It's a pleasure to be in the litfest. Today I'm going to review a book from the book series Roald Dahl. The name of the book is Matilda, a little girl who lived in England named Matilda. She lived with her parents and brother Michael. Michael was a favorite child. He got all the love and attention and even a good school. But Matilda didn't. She didn't because her parents were selfish and jealous of her, and she got ignored by them all day long. Eventually, one day she got a school, and it was obvious that she knew a lot of this stuff because she had been training herself by reading books. But every positive does has a negative. Miss Trunchbull was the headmistress of the school, and she took advantage of her position. She was evil, cruel. She was evil, cruel, and strict of students. And one day Matilda got attacked by Miss Trunchbull, and there Matilda gets to know that she has to mark multiple pass. I will not tell the pass because that will take all the fun. This book is a bit lengthy. It has 21 chapters. This book inspires you to read first, and it tells you a lot of these things. First, if your aura is positive, no negative can destroy your goal. Second, if you have a thirst to achieve your goal, you will make your way on your own. Third, reading. Just reading will make you intelligent enough. This is a funny, this also has a movie. Some scenes might change, but the motive is the same. This also has a movie, and the name of the movie is Matilda. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Omisha. If I had to give a book review, I would not have been able to speak for so long. Thank you so much, Omisha. You have been wonderful. Moving on to the next child, we are going to Priyanshu. Is Priyanshu there? Yes. Good evening, Priyanshu. We can't see you on the screen. Please come on the screen. Yes, sir. My camera is on. Very good. Very good. The screen is yours. Please go ahead. Hello, everyone. My name is Priyanshu from class 7. Today, I am going to present a story, and the story is Father and His Sons. A father had 4 sons. He loved them very much, always used to help each other in trouble. When he was lying on the bed of death, he called all his sons beside him and asked each to take a stick. He told his eldest son to take all the sticks together and tie them in a bundle. After that, he told them to break it one by one. All his sons tried, but they were unsuccessful to break that bundle of sticks. Then he told them, now break your own stick that you took individually. Again they tried and they were successful to do so. As a result, his father told them that when the sticks were in the form of bundle, none of you could break it. And when the sticks were not in the form of bundle, everyone broke it. Then all his sons started smiling and understood the feeling of their father. Moral of the story: united we stand, divided we fall. Thank you. Thank you so much, Priyanshu. Next, we have Pallavi Mishra. Pallavi, are you there? Yes, ma'am. All the best, Pallavi.
Stage is all yours. Thank you. Ma'am, एक मिनट. Pallavi. Good evening to all. My name is Palim and today I am telling you a story and my topic is जैसे को तैसा. किसी जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहती थी. उनकी बहुत ही अच्छी मित्रता थी. एक दिन लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं सारस को अपने घर बुलाऊं और उसे भोजन पे निमंत्रित करती. सारस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोमड़ी के घर जाता है और लोमड़ी दरवाजा खोलती है और उसका स्वागत करती है. वो कहती है सारस तुम्हारा स्वागत है. सारस जाता है उसके घर में और लोमड़ी उससे खाना परोसती है मेज पे और कहती है सारस बैठो खाना खाते हैं. तो जो लोमड़ी रहती है वो खीर थाल में परोसती है और कहती है चलो खाते हैं. लोमड़ी अपने जल्दी जल्दी से खा लेती है और जो सारस रहता है उसकी चोंच जो होती है वो बहुत ही लंबी रहती है और सारस भोजन नहीं प्राप्त कर पाता और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो लोमड़ी की चाल को भाप जाता है और कहता है मैं लोमड़ी को जानता हूँ, ये बहुत ही चतुर है और इसीलिए जान के मुझे इसने थाली में दिया. फिर वो कहता है कि क्यों ना मैं भी लोमड़ी को घर पे बुलाता हूँ और इसे खाना परोसूंगा. तो वो कहता है ये लोमड़ी तुम भी मेरे घर आओ, जब तुमने मुझे इतना अच्छा मौका दिया तो मुझे भी मौका चाहिए. तो वो कहती है ठीक है मैं आऊंगी आपके घर. तो सारस भी बुलाता है और लोमड़ी भी जाती है उसके घर. तो लोमड़ी भी सारस भी वैसे ही स्वागत करता है, कहता है हे लोमड़ी आओ तुम्हारा यहाँ स्वागत है. तो सारस और लोमड़ी मेज पे बैठ जाते हैं और सारस सुराही में खाना परोसता है और सारस अपने खाने को खा लेता है और जो लोमड़ी रहती है वो अब अपनी गलती को मान जाती है और कहती है हे सारस मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हें थाल में खाना परोसा था और इसके लिए मुझे माफ कर दो. तो सारस बोलता है अच्छा लोमड़ी मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मैं तुम्हें थाल में खाना परोसता हूँ. और वो उसे थाल में खाना परोसती है. फिर वो दोनों साथ में खाते हैं और इस कहानी का मोरल ये है कि हमें अपने दोस्तों से कभी कपट नहीं करना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू पल्लवी, थैंक यू. आपने बहुत बहुत अच्छा बोला. आप सारों की स्टोरीज में एक मॉरल है जो हमें सीखने को मजबूर करता है और आपकी जिस तरह से आप बोल रहे थे पूरा एक्ट भी कर रहे थे तो बहुत बहुत अच्छा लगा. आगे चलते हैं. वी आर कॉलिंग आशा मिश्रा को बुला रहे हैं 4th क्लास की. आशा मिश्रा आप हैं वहाँ? यस सर, वो मेरी सिस्टर है. ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सबसे छोटी लड़की है मेरे ख्याल में, नहीं उनसे भी एक छोटी है, 4th क्लास की. तो उनको बुलाइए स्टेज पे. हो गया बोलो ना, स्टार्ट करो. गुड इवनिंग टू ऑल. माय नेम इज आशा मिश्रा. आई रीड इन क्लास 4th. आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एक शेर और एक खरगोश की. एक जंगल में एक शेर रहता था. वह उस जंगल का राजा था और वह अपने आप को बहुत ही चालाक और ताकतवर समझता था. वह अपने आप को वह हरदम हर एक जानवरों को खाता था और अपने आप वो एक दिन खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने बोला मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा. तो शेर बोलता है जो मेरे पास आता है मैं उसे खा लेता हूँ. तो वो बोलता है आप मेरे से खाने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा. शेर बोलता है बोलो. खरगोश बोलता है कि जो वो गुफा है वहां पे आप जाइए और आपसे एक कोई चालाक और ताकतवर है. जब वो जाता है तो उस पानी में देखता है उसी की परछाई दिखती है. वह सोचता है शेर सोचता है कि वो मेरे से चालाक और ताकतवर है. जब वो देखता है वह शेर जब दहाड़ मारता है तो वैसी ही सेम आवाज आती है तो वह पानी में कूद जाता है. हमें इस कहानी से ये मोरल सीखते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. Thank you, sweet little Asha. Now, do we have Rajnandini? Yes, ma'am. So, Rajnandini has another flavor to the session. There's a poem that she would recite. Over to you. Yes.
Thank you. Raj Nandini, please unmute yourself. अरे यहाँ से आप करिए. Yeah, take your time. Take your time. Yes. काजल फैला हुआ है. Start. Hello everyone. Good afternoon to all my dear respected teachers and my dear friends. Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity. Today I am presenting a poem by Robert Frost titled Fire and Ice. Some says the world will end in fire. Some says in ice. From what I have tasted a desire, I hold with those who favor in fire. But if it had a Paris twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. It means the poet says love and desire, and the eye is the symbol of hatred and destruction. Destructions, emotions, as to I think there is some connection problem. IT team, is it possible for you to play the recording? Candidate number 6, Raj Nandini. yes, Okay, ma'am. Ma'am, can I repeat once again? Raj Nandini, there's a problem, network issue at your end. Okay, ma'am. So can I repeat once again? So you can try it once. If there would be a disconnection, then we'll play the recording. Okay, ma'am. Rajnandini, unmute your video, please. Perfect. You can start. Hello, everyone. Good afternoon to all my dear respected teachers and my dear friends. Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity. Today, I am presenting a poem by Robert Frost titled Fire and Ice. Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted a desire, I hold with those who favor in fire. But if it had a Paris price, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. It means the poet says fire is a symbol of love and desire, and ice is a symbol of hatred and destruction. Moral. The poem is revolting around the theme of humans' destructions, humans' emotions, and destructive has two possible forms. Thank you. Thank you so much, Rajnandi. That was a wonderful poem by Robert Frost. Moving forward, we have Swati. Swati studies in class 9. And do we have Swati? Swati, are you there? Yes, sir. Yes, sir. So the stage is all yours, Swati. So please go ahead. There's a story you are telling, so please go ahead. All the best. Yes, sir. Thank you, sir. सर हम स्टार्ट कर रहे हैं.
स्वाति आप स्टार्ट कर लीजिए। सर एक सेकेंड। सर एक सेकेंड, मंकी आ गए। यस सर, 1 सेकेंड। So everyone around is so excited that they really want to be in that. यस मैम। यस सर, स्टार्ट कर प्लीज रहे हैं। प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू, प्लीज स्टार्ट कीजिए। Hello everyone, good evening to all my respected teachers and my sir and my friends. My name is Swati, I live in Delhi. I am telling a story. My story title name is The Ant and the Grasshopper. In a field one summer day, a grasshopper was hopping about, cheering and singing to its heart contact. An ant passed by, bearing along with great effort and air. Great effort in air. He was सर कॉल आ गया था, सॉरी। कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, बोल दीजिए। यस सर, सॉरी। सर हम दोबारा से करें क्योंकि कॉल आ गया था। Hello everyone, good evening to all my respected teacher and my friends. My name is Swati, I live in Delhi. I am telling a story. My story title name is The Ant and the Grasshopper. In a field one summer day, a grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart contact. An ant passed by, bearing along with great effort and air. He was and give great effort and air. He was taking to the nest. Why not? Come and chat with me. Come and chat with me. Come and chat with me. In a side, grasshopper taking to the nest, toiling and moiling away. Moral. Today work timely. Thank you. Thank you so much, dear. So do we have Gautam? Yes, ma'am. Okay, Gautam, stage is all yours. मैम आई एम सॉरी मैम, हम कैमरे के सामने हमें थोड़ा अजीब लग रहा था। कोई बात नहीं मैम। कोई बात नहीं मैम हमें बहुत अच्छे से याद है, बट मैम हम कैमरे के सामने बहुत घबरा गए थे। मैम कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और भी अच्छे से करना। मैम थैंक यू मैम। हम भी कैमरे के सामने बहुत घबरा जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रखा था सर, कैमरा जैसे आया हम बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे, हॉपलेस हो गए थे। ठीक है, अभी गौतम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। आ जाइए गौतम, आपकी टर्न है बेटा। यस मैम। स्टार्ट कीजिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गौतम है, मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है आलसी कौवा। एक कौवा और एक गिलहरी बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों में अच्छी मित्रता थी। वही कौवा बहुत आलसी था और गिलहरी तेज और फुर्तीली थी। दोनों ने एक दिन सोचा क्यों ना खेती की जाए, दोनों के कड़ी परिश्रम से अच्छी फसल होगी। कुछ दिनों बाद गिलहरी ने कौवे से कहा, खेतों में पानी डालने में मेरी सहायता करो। कौवे ने कहा, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। बेचारी गिलहरी ने खेतों में पानी दिया और कौवा यूं ही पड़ा सुस्ता रहा था। 2-3 माह बाद गिलहरी ने कौवे से कहा, खेतों की कटाई करने में मेरी सहायता करो। कौवे ने वही बात दोहराकर बात को टरका दिया। गिलहरी मेहनती और ईमानदार थी, इसलिए उसने खेतों की कटाई की और उसके 2 भाग के एक भाग वह बैलगाड़ी पर लादकर गोदाम ले गई और दूसरा भाग कौवे के लिए खेतों में छोड़ दिया। कौवा यूं ही पड़ा रहा। वर्षा ऋतु आ गई। कौवे ने एक दिन सोचा क्यों ना अपनी फसल खेतों से ले आई जाए। जैसे ही कौवा फसल लाने के लिए तैयार हुआ,
फसल आने के लिए तैयार हुआ, ढोल की बरखा शुरू हो गई और उसकी फसल बह गई। आलसी कौवे के हाथ कुछ न लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस करना बुरी बला है। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा. So after Gautam, we have Anilji. Please announce. Yeah. After Gautam, we have got Ansh. Ansh beta, you are there? Yes, sir. आप वहाँ हैं? Yes, sir. Good, 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 good. आप दिखाई नहीं दे रहे. Sir, on कर दे. Back camera कुछ कर दे. Sir, 1 second. बिल्कुल 2 सेकंड ले लीजिए, कोई बात नहीं है. यस, अब आप नजर आ रहे हैं अच्छी तरह से. चलिए आप स्टार्ट हो जाइए. आप स्टोरी बोलेंगे? Yes, sir. शाबाश, स्टार्ट हो जाइए. हेलो, मेरा नाम अंश है. मैं छठी में पढ़ता हूँ. आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डरपोक पत्थर. वह कहानी कुछ इस प्रकार है. एक मूर्तिकार रहता था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था. तो आसपास से सभी गांव के लोग उसी के पास. अंश बेटा आप थोड़ा सामने आके बोलिए. हाँ, थोड़ा सामने आके बोलिए. आपका जो कैमरा है वो काफी दूर है, आवाज नहीं आ रही है बस. हाँ ठीक है, आप बोलिए. मेरा नाम अंश है. मैं कक्षा छठी में पढ़ता हूँ. आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डरपोक पत्थर. वह कहानी कुछ इस प्रकार की है. एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था. वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था. आसपास के सभी गांव के लोग उसी के पास मूर्ति खरीदने आते थे. हाँ शाबाश, बोलिए बोलिए. एक दिन वो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढने जंगल गया. तो उसे एक पत्थर मिला जिससे वो तराशने लगा. वो उसे तराश ही रहा था तो वो पत्थर चिल्लाया कि मुझे दर्द हो रहा है. तो वो मूर्तिकार वहां से चला गया और दूसरे पत्थर ढूंढने लगा. जब उसे दूसरा पत्थर मिला तो उसे तराशने लगा. उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था. उसने उसे अंदर ही रखा, चिल्लाया नहीं. और जब वो मूर्ति बन गई, वो एक बहुत सुंदर मूर्ति बनी थी. तो जब मूर्तिकार बनाते बनाते रात हो गई थी, वो रहने के लिए एक मंदिर में चला गया. और जब उठा तब कुछ लोगों को बातें करते हुए सुन रहा था कि इस मंदिर तो बन गया है, बट इसका जो मूर्ति है ये हमें मिल नहीं रहा है. तो उसने वहां के मुखिया के पास जाकर बोला कि मेरे पास एक मूर्ति है जिसे आप चाहे तो इसमें मंदिर में लगा सकते हैं. तो मुखिया मान गया. तो फिर जब मूर्ति को रख दिया गया मंदिर में, तो वहां पे बोला गया कि मुखिया ने कहा कि इसको नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए होगा. तो उन्होंने बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है. वो आवाज नहीं आ रही है. वहां जाके पत्थर रख दिए. सर फिर जब वो पत्थर को नारियल फोड़ते थे उस पे और मूर्ति की पूजा करते थे, तो पत्थर ने बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हें लोग पूछते हैं और मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं. तो मूर्ति ने बोला कि अगर तुम उस दिन थोड़ा सा दर्द सहन कर लेते तो आज ये नौबत ना आती. आज तो वो पत्थर भी बोला कि अगर मैंने थोड़ा दर्द सहन कर लिया होता तो ये आती नहीं. इसकी सीख है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए. थैंक यू. थैंक यू अंश. हमें कभी भी कठिन परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए. बहुत अच्छा बोला आपने. डिम्पल, आप हैं ऑनलाइन अवेलेबल हमारे साथ? यस मैम. आ जाइए स्टेज पे बेटा. यस मैम.
Yes, ma'am. स्टार्ट करिए डिम्पल, आपकी स्टोरी है ना, स्टार्ट करिए। Yes, ma'am. Hello, everyone. Good evening to all. My name is Dimple from 6th class. I am Dimple from 6th class. My topic is a little puppy. One day, a 10 years old boy was walking in park with his mother. Suddenly, he noticed a sobbing sound from the bunches as if a newborn baby was crying over there. He quickly followed the sound, but when he reached there, he found a small puppy of barely 10-15 days. Thank you. Thank you, Dimple. Thank you. Thank you. Yeah. So, the 11th person is Manoranjan. वो मेरे ख्याल में join नहीं कर पा रहे हैं. I think can we play the video of Manoranjan if that is available? Yeah, it is available. Can you play the video, please? Sorry, can you repeat the name? Manoranjan. Okay, wait. Candidate number 11, Manoranjan. कुमार है। मैं आप सभी के लिए कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बात बहुत पुरानी है। एक राजा का बहुत बड़ा राज्य था। वह राजा डिफरेंट एंड डांस फॉर्म पेंटिंग को काफ़ी बढ़ावा देता था। वे बहुत दयालु था और उनका राज्य काफ़ी समृद्धि था। पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनके मन में दुख था कि राजा का बेटा बहुत कठोर दिल का था। वे अस्त्र शस्त्र व बल को ही एक अच्छे राजा का निशानी मानता था। राजा को यह डर था कि अगर फ्यूचर में उनका बेटा राजा बनेगा तो उनके सब्जेक्ट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए राजा ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, पर उनका बेटा उसकी बात को मजाक उड़ा देता था। एक दिन राजा ने परेशान होकर राजकुमार को अपने गुरु के पास भेजा। राजकुमार के हाव भाव देखकर ही गुरु समझ गए कि राजकुमार को कुछ भी समझाना बेकार है। वह बल को ही बुद्धि से ज़्यादा बड़ा मानते हैं। इसलिए गुरु ने एक रस्सी जिस पर एक ही जगह कई गांठें लगी हुई थी और राजकुमार को उसे खोलने को दिया। राजकुमार को काफ़ी देर तक खोलने का प्रयास करने लगे, पर जब भी राजकुमार उसको जोर जबरदस्ती से खोलने की कोशिश करते तो वह गांठ उतनी ही जल्दी उलझ जाती। अंत में राजकुमार रस्सी को काट दिए। तब गुरु ने रस्सी को उठाया और रस्सी को गांठ खोलते हुए राजकुमार से बोले, इस रस्सी की तरह आपका जीवन भी है। इस पर पड़ी गांठें आपके जीवन में कठिनाइयाँ है। अब यह आप पर है कि आए इसके गुस्से से तोड़ देंगे और अपने जीवन को कष्टपूर्ण माना लोगों या धर्म से बुद्धि का इसमें इस्तेमाल करके इसे आसानी से खोल लोगे।
इंसान की सही पहचान उसकी बुद्धि और व्यवहार से होती है। So that was Manoranjan. He could not join us online. And the next candidate is Mahima. Mahima, are you there, beta? Yes, ma'am. All the best. Thank you, ma'am. मैं स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट करूं? हेलो मैम। Hello. Yes, go ahead. Go ahead, मैम Mahima. मेरी आवाज आ रही है? आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही? मैम मैं स्टार्ट करूं? हाँ, स्टार्ट करिए बेटा। मैम एक मिनट। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज तन्ना, आई रीड इन क्लास 7 और मेरी आज की स्टोरी का नाम है बंदर और बया। किसी ब्रिज पर उसी सॉरी मैम, किसी का कॉल आ गया था गलती से। मैम मैं दोबारा स्टार्ट करूँ? हाँ बेटा, आप दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। Good evening everyone, my name is Bahima and today's story name is बंदर और बया। किसी वृक्ष पर एक बंदर आता था। उसी पेड़ पर किसी चिड़िया का भी घोंसला था। एक दिन बहुत तेज वर्षा हुई। बंदर वर्षा में पूरी तरह भीग गया, लेकिन बया अपने घोंसले में छिपकर बैठ रही। वह जरा भी नहीं भीगी। वर्षा समाप्त होने के बाद बया ने बंदर का दुर्दशा देखकर बोली, बंदर भाई, यदि तुम भी मेरी तरह घर बनाकर रहते तो आज वर्षा में इतने ना भीगते। बंदर को बया की बात चुभ गई। उसने न आओ देखा न ताओ देखा। उसने छत से बया का घोंसला उखाड़ा और फेंक दिया और दांत दिखाते हुए कहा, बड़ी आई तू उपदेश देने वाली, अब बता तू कहाँ रहेगी। बया खून का घूंट पीकर रह गई। बोली, बंदर मैं तो अपना घर बनाकर रह लूंगी, पर एक बात मैं समझ गई कि उपदेश हमें किसी बुद्धिमान और ईमानदार को देनी चाहिए, ना कि मूर्ख को सीख देने से ही अपनी ही हानि होती है। इतना कहकर बया किसी दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाने की तलाश में उड़ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्ख को उपदेश देने से अपनी ही हानि होती है। थैंक यू। आई होप कि आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू। स्टोरी बहुत पसंद आई आपकी और आपने बहुत अच्छा बोला। अब आगे चलते हैं। आकांक्षा नहीं है, उनका वीडियो प्ले कर सकते हैं? वेट करो। नंबर 13, आकांक्षा। Hello everyone, I am Aksha from class 11th. I feel extraordinarily proud and privileged to have got an opportunity to recite a poem. So the poem is Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic worlds, where word came out from the depth of truth, where tireless tiring stretches into arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreamy desert sand of death habit, where the mind is led forward by these into ever wending thoughts and action into the heaven of freedom. My father, let my country awake.
Rabindranath Tagore is known as Gurudev. He was a polymath, poet, musician, and artist. He was awarded the Nobel Prize of Gitanjali poem in 1913. He has written Janaganman and Bangladeshi Amar Sohar Bangla. He established Shanti Niketan in Kolkata. Thank you. So that was the video of Akansha. Thank you, Akansha, even though you couldn't make online today, but yes, your video showed your expression. Do we have Diksha ready? Diksha, aap ho beta yahan? Yes, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. So, आप story सुनाने वाले हो class 7 में हो? Yes, ma'am. All the best, beta. Start. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Hello, everyone. I am Diksha. I speaking storytelling. My topic टीचर एंड स्टूडेंट। एक बार एक क्लास में टीचर ने स्टूडेंट को कहा तुम्हें लेसन सुनाना है। तो स्टूडेंट खड़े होते दो स्टूडेंट लेसन सुनाने लगा। स्टूडेंट ने 2 लाइन पढ़ी तो टीचर ने बोला बेटा बैठ जाओ। स्टूडेंट ने हिम्मत दिखाई और लेसन पढ़ने लगा। मैम ने बोला बैठ जाओ। अब बच्चा डर के मारे बैठ गया। टीचर ने दूसरे स्टूडेंट को कहा तुम सुनाओ। स्टूडेंट सुनाता है तो मैम उसे बोलती है बैठ जाओ। स्टूडेंट दोबारा सुनाता है, मैम उसे बोलती है बैठ जाओ। जब वो पूरा चैप्टर कर लेता है तो मैम बोलती है बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया। जो बच्चा बोलता मैम मैं भी तो यही सुना रहा था। मैम बोलती है तेरे पढ़ने और इसके पढ़ने में फर्क था। मैम बोलते इसे भरोसा था कि ये सही पढ़ रहा है, ये सही पढ़ रहा है, इसलिए ये सही पढ़ रहा है, इसे भरोसा था कि ये सही पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है। जो मोरल है वर्ल्ड विल से नो टू यू। दुनिया आपको हमेशा कहेगी गलत कर रहे हो। वही दुनिया तुम्हारे लिए बाद में तालियां बजा रही होती है। थैंक यू। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल अच्छी लगी। आपका मॉरल बहुत अच्छा है। दुनिया आपको कहे कि गलत है मगर आपको पीछे नहीं मुड़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ रहे हैं रोहित राज। रोहित राज, आप स्टेज पे आएंगे प्लीज। Anil, I think इनका भी हमें वीडियो प्ले करना पड़ेगा। सो रोहित राज का वीडियो प्ले कर लेते हैं। They always collect with one another. The farmer was very sad. Once he was very ill. He called his son. He gave them the bundle of. He asked them to break it. All tried but failed. Then the farmer united the bundle of. He asked them to break the stick one by one. Everyone broke the stick easily. As a result, his father told them that when the sticks were in the form of a bundle, none of you could break it, and when the sticks were not in the form of bundle, everyone break it. Then all his sons started smiling and understood the feeling of their father. Moral: the story teaches us that unity has strength, and he should always be in unity. So, टेक्नोलॉजी ने आज बहुत इजी कर दिया है कि हमारी प्रेजेंस भी ना होते हुए भी हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छे से फील हो जाती है। और इन छोटे बच्चों ने जो एफर्ट किया है दैट अगर नेटवर्क इशू आता है उनकी कोई वीडियो हम अपलोड कर सकें, सो कुडोस टू देम फॉर देयर
enthusiasm and also the team which has prepared them. Not taking much of the time, I would like to invite Shubham. Shubham, beta aap hain? Online available? Yes, ma'am. Please start kijiye. All the best. Good evening, ma'am. Hello, everyone. My name is Shivam. I am class 4 storytelling. हाथी और एक तोता था। एक बार एक हाथ तोता एक पिंजरे में कैद था। वह एक बार तोता पिंजरे से बाहर निकल गया। वह तोता उड़ते उड़ते एक जंगल में पहुंच गया। वह जंगल में बहुत अजीब जानवर थे। उसने जंगल का वातावरण देखा तो वह बहुत अच्छा लगा। एक बार एक पेड़ के नीचे हाथी सो रहा था। वह हाथी उसने सोचा कि क्यों चले हम मस्ती करने हाथी से। वो हाथी के सर पर जाके चोंच मारने लगा। जब हाथी उठता था तब वह पेड़ पर चढ़ जाता था और हंसने लगता था। और हाथी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों मार रहे हो, मुझे सोने दो। तो हाथी फिर सो गया। फिर तोते ने चोंच मारा तो हाथी उठकर गुस्से से उसके तरफ देखा तो उसने मन में सोच लिया था किसको सबक सिखाना है। वह हाथी एक योजना से पानी में गया। वह अपने सूंड में पानी भरकर बैठ गया कि तोता आएगा तो सर पर मारेगा तब मैं उस पर पानी डालूंगा। वह सोचकर वो पानी में उतर गया। तोता फिर देखा कि हाथी पानी में बैठ गया है तो चले उसके सर पे मारने। तो तोता जैसे ही मारने लगा वैसे ही हाथी ने पानी डाल दिया। फिर तोता तड़पने लगा तो उस पे दया आई। हाथी फिर उसने बाहर निकाल दिया। थैंक यू। थैंक यू शुभम। तोता और हाथी की स्टोरी है, मैंने पहली बार ही सुनी हुई है। थैंक यू शुभम, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत छोटा बच्चा आ रहा है स्टेज पे। नाम है अमन राय। अमन राय, आप बेटा वहां हो? अमन राय। अमन राय बेटा आप हो? आपको सुनाई दे रहा है? Yeah, I can see him. हाँ जी अमन जी, आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहे हैं आप। Yes. हाँ, अब आप कैमरा में देखिए और शुरू हो जाए। Yes. Hello everyone. My name is Aman. I read in class 8. I am speaking the story of the thirsty crow. It was a hot summer day. A thirsty crow flew into a village in search of water. The crow flew over the houses, fields, and trees, but he did not find any water. After a long time, he found a pitcher under the tree. Happily that he found some water. He moved quickly toward the pitcher and looked inside. There was a very little water in the pot. The crow put his beak inside the pitcher but could not reach the water. The water level was too low. He tried to push the whistle down, but it was too heavy. The crow was disappointed. He was really thirsty and needed a drink of water. He looked around and thought, what else can I do? He said that there were a lot of pebbles on the farm and he had an idea. He collected a pebble and put it into the pitcher. He collected another pebble and another and put them all in the pitcher. As he added more and more pebbles, the water level came up to the brim. The crow drank the water and back home happily. Thank you. Thank you, Aman. बहुत अच्छी story सुनाई आपने. A big round of applause to you. Thank you, ma'am. Thank you. अब अमन के बाद हम दिव्यांश को बुलाते हैं. दिव्यांश, आप
रेडी है? दिव्यांश? मैम एक सेकेंड, मैम एक ओके। मैम 1 सेकेंड। Yes, please. Welcome, Divyansh. मैम 1 सेकेंड, मैम 1 मिनट रुकिए। Okay. मैम फोन आ रहा है। अच्छा। ये क्लास 3rd में है दिव्यांश। So Divyansh and Aman, same standard, class 3 students. यस मैम। आ मैम जाइए। क्लास 3rd में है हम। जी, आज क्या सुनाएंगे आप? मैम गुड इवनिंग टू ऑल, माय नेम इज दिव्यांश यादव। आप सबको मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ, वो है चूहा और शेर और चूहा। मैम एक चूहा आराम से पेड़ के नीचे सोया था, तो एक शेर पेड़ के नीचे सोया था, तो चूहा उसके पेट के ऊपर कूदने लगा। तो फिर वो कूदने कूदने तक वो शेर उठ गया। फिर वो बोल रहा है, तू मेरे को जानता नहीं है, मैं कौन हूँ? मैं जंगल का राजा हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं अब तेरे को देखूंगा कभी। फिर एक जंगल में कोई आतंकवादी आते हैं जाल बिछाने के लिए, तो उसको जाल बिछा के पकड़ा जाता है। तो फिर उसकी हेल्प करता है चूहा, वो जाल काट देता है। थैंक यू। Thank you so much, Divyansh. अनिल जी, अब नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम बुला रहे हैं भविष्य को। वेलकम मैम। भविष्य, आप सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है आप सामने आ जाइए। गुड इवनिंग मैम। भविष्य, आप क्या सुनाएंगे? सर मैं एक हिंदी में पोयम सुनाऊंगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए। गुड। कोटि कोटि कंठों से गूंजे तेरा गौरव गान, जय जय भारत देश महान। ऊंचा पहाड़ हिमालय तेरा पांव धो रहा सागर, गंगा जमुना जैसी नदियां संगम करती आकर। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं विशाल एक सम्मान, जय जय भारत देश महान। देवी देवता संत धर्मगुरु ध्यानी ज्ञानी मानी, अपनी प्राणाहुति देकर मिटने वाले मुक्ति युद्ध सेनानी, उसके सत्कर्मों का जगत भर में हुआ बखान, जय जय भारत देश महान। तेरी रज में खेल कूद कर बड़े हुए हम सारे, तेरी खातिर जिए मरे और बंधन कटे हमारे। संकल्पों की ध्वजा हमारी समता,
का अभियान जय जय भारत देश महान. Thank you. Thank you, Vijaya. Thank you. It was amazing. Thank you, ma'am. I would like to apologize to Tanu. I'm sorry, I forgot to announce your name. So I hope you are ready and you can join us now. Tanu Yadav. Yes, ma'am. Yeah. So Tanu, you are in class 6. Yes, ma'am. Okay. Please start करिए अपनी story. Hello everyone, good evening to all. My name is Tanya Dev and today is my storytelling session. My story name is Jim and the Old Lady. This is the story of Jim, an 11-year-old boy, a poor orphan boy. He earned a living by polishing people's shoes. Jim barely earned enough to buy one square meal in a day. One winter night when it grew cold outside, one lady knocked on Jim's door. When Jim opened the door, she requested to give him some food. She had not eaten for days and looked very weak too. Jim had just loaf of bread that he was about to eat for dinner. He hadn't eaten anything the whole day. Looking at the old lady, he thought that uh, uh, she needed more bread more than he had. He willingly gave her the bread. As soon as the old lady ate the bread, she transformed into a fairy. She was happy with Jim began to such as good day. She blessed with a lots of food and rich. Jim never went hungry after that day. Thank you. Okay, thank you, my dear child. I just want to interrupt the session for 2 minutes and would like to invite Archana ma'am, who is founder of this NGO. And yes, all the kids who are there in the list, they would be given their chance. But we would love to hear from Archana as well. So the stage is yours, Archana. Thank you. Hi, Mansi. Thank you very, very much. First of all, I must congratulate the whole team. When Rahul asked me that, such as the, program or event you're planning, and I was a little apprehensive of how do we participate. I'm very happy that I could make this, and all the volunteers, they made an effort. And so when I started gavaKsh, I was excited also to join this event, because when we started gavaKsh, in the initial of few months, the base was only storytelling. And then, in due course, our focus changed from storytelling to other forms, and then post-schooling kind of schooling setup where we are more focused on education. But then I think such are the platforms which will, keep, getting us back to the world of imagination, expression. And I'm very happy to see all the kids. It's such a happy moment to see them, sharing their stories here. Thank you very much. Grateful that, you could prepare them. See, everyone has their own role. As in, supposedly, Rahul, me, Anil, we are doing this part as in, presenting. But then there's a lot of homework that is done behind the scene. So all of us are, in part of that master plan wherein we are contributing our bit. So I would say, Anil, you also express
your experience in this all setup that we are associated with? Yeah, sure. First of all, let me thank you so much for bringing the children here. It was such a nice experience listening to them. I think I'm very proud of children of my country, wherever they come from, are coming onto the stage and speaking like this. If I compare that with what I was at their age, absolutely, there's a world of difference. Even though years have gone by, but still, coming onto the stage, speaking on a virtual platform, I think there are no two words about it. I agree with you. Absolutely wonderful. And I think this is just the first opportunity. I think the more they come on the stage, because you look at various platforms, children are coming. If you see on TV, children are expressing themselves so much on, and the way they are expressing as if they own the world. कुछ भी आ जाए हम तो मतलब फान देंगे, पार कर देंगे. That is the type of confidence that they have. I'm just cutting you here, but I think I would like to add that the जितने छोटे बच्चे होते हैं, they are very it's very easy for them to express because look at the innocence coming in with that when the monkey came and they for a moment they got distracted and so 1 minute monkey aaya. So that excitement, you could hear that, and it was so natural. I was really enjoying. I'm in office, but so it was like these kids are so full of innocence, and that it's very, very easy for them to express themselves. Yeah, and that is the thing that we have to continue giving them, that those platforms, that confidence, वो आगे भी बढ़ती रहनी चाहिए. That should continue happening, and they are the people who will change India. If India is to become a superpower in soft skills, in around the world, in all the skills, I think these are the people who will change the future for India. And you are doing such a wonderful job. You're doing such a wonderful job. I'm so thankful to you for you, as well as to Rahul, for thinking of this as an opportunity of people coming onto the stage. And it's a very unique thing about this Phoenix Litfest. Absolutely wonderful. We'll be participating in future as well. And in fact, I'm so proud of my kids, and it's a special thank you to all my volunteers. I'm sure they're there. That they are doing wonderful. One is that you're trying to empower these kids, but there's also one more aspect to it, that you're empowering the youth of the country to make them have this give back society approach and attitude. And I think that's equally important. So all these volunteers, they take out time from their studies or their other important things. So all this goes, the credit is all all the gavaKshers, senior gavaKshers there. And I would say you can always invite Anil. He's a trainer, workshops, anything. He loves to, do seva is the right word if I use it here in this platform. Amazingly, I have seen how dedicatedly he has been doing that work at ground level. Hats off to him. I tell him these are the things, but on ground, it's the Anil who does the job. So I'm going to catch you now. So yeah. Can you share something more about the organization, because there are 26. There are quite a few people on the platform who might not be knowing about all the different things that you are doing. So if you could share something more about what you are doing and what are your plans for the future, I think we would love to hear that. Yeah. So basically, gavaKsh is when we started, it started like in post-schooling support program, where we have a community in ITO where we go and work. So our major task was to make sure that every child of that community go to school. So we started with that, and we used to go and just do storytelling. That was the base, and then we used to encourage parents to make sure that their child at least start going to school.
And we, as in, kind of a team, used to support them with post-schooling, like, tuitions and extracurricular activities and all that. And then when last year pandemic happened, it was all, the whole thing, got back to standstill. Then what we did is that we turned the whole of the model of, ground training to the online, so which is our new project called the gavaKsh Digital Pathshala. And happily, we are able to do all that. Basically, what we do is that we one section is that we do community empowerment, where we make people aware how important it is to have a foundation. Going to school is important, and it involves great amount of effort to go and speak to parents and keep pushing them that they should be, even if they don't understand, they can't read, but they can make sure that their child is reading, so that tomorrow the same situation doesn't turn with their children. Second is that we try and see kids, their area of interest, like in extracurricular activities. That's very important. Like storytelling is an art. Similarly, singing is an art, dancing is an art. So we try and keep giving them exposure. So initially what we do is that we make all the kids do everything, so that at least they experience that side of, that side. And if they feel that, dancing is something which is their passion, then they can, continue, take it as and pick it up as a profession later. So unless you, like, for example, sweet is sweet, the halwa is sweet, the toffee is sweet, the chocolate is sweet, the pastry is sweet. But if you don't make them taste different varieties, they will never know that, there's so many forms of, taste. So it's just like that, there's so many platforms. So they only see now, even with this pandemic, I see it as an opportunity, because, earlier these kids would have not been able to be on social media or on the online platforms to, see so much. So this, I think, has brought in and opened their horizon on seeing of, what all is there and what all they can. So I think that's a positive side of the, pandemic, whatever, COVID-19 thing. And third is very important, is that, give, like, this is a platform. So when a child is interacting with new faces and they're speaking, like, it needs a lot of courage to come online and, speak. Mostly people shy away and they they don't come on platform. Even if you ask me, I'm very limited with coming online, so because Rahul Bhaiya is, I have a great regard for him, and it's a very beautiful relationship we shared for a very, very long time. So, so you shy away. So the moment we give them exposure to interact with new faces, these kids would have not seen you before. So they interacted with you for the first time. So that gives them a confidence that, okay, now what is next? So what we do is that, even in gavaKsh, we try and get people from different segments. So, we do yoga sessions, we do Zumbas, we do art and craft. And thankfully, to my surprise, that we are able to do all that also online. Because I was very apprehensive that, teaching still, you can imagine, when pandemic happened, people were very, and, there was all kinds of assumptions that, whether it is possible to teach online, is possible that, you can interact with kids, because, there's no human interaction, like, we are not physically meeting, we're virtually meeting people. And there's no emotional exchange of vibes and that thing. But then slowly and gradually it happened, and I can see the bond my volunteers and kids share. They together learn from each other. I can see, because I interact with both the sets, so I know how much the kids are growing and how much the volunteers are growing by being involved in such activities. It's very, very important. It's very crucial, because they also change in the process. You become, from a consumer, you become a creator. You're trying to, whatever you learn, and then they're also given additional responsibility. Someone is like, become a coordinator of content, someone become the coordinator of social media, someone will become the coordinator of, creating graphics, organizing. So it's not just teaching, they also, as a volunteer, they also grow. So what I say is that, of course, working on these kids in that set is important. Equally, it is important to prepare our volunteers or these young people to be ready to contribute in whatever capacity they can. So gavaKsh is basically a medium where we try and get both the people who need and people who can provide, to give them a platform for, exchanging their
it's a two-way learning. Yeah, Yes. it's a two-way learning. It's not a one-way learning. So it's not that the volunteers are only teaching; they're also taking away, and they're also learning in the process and growing equally. And definitely we'll connect with you offline as well to know more about it. And thank you so much for joining in. And I'm sure the kid who is next in line would be waiting for his turn. So not taking much of the time, may I call Kundan? Kundan, आप ready है बेटा? Yes, ma'am ji. Please, आइए. Good afternoon, everyone. Today I will be speak on the topic The Lion and the Mouse. Once upon a time, there lived a lion who ruled the forest. One day, after eating his meal, the lion filled his pill under a tree. A little mouse was also playing nearby. Up and down upon him, this soon wonked. The lion caught the mouse in his hung paw and said, "You little mouse, how dare you make me? I will kill you." The mouse was frightened. He requested the lion, "Perdono, king, please do not kill me. I am little creature. Please let me go. I will help you in future." The lion lowered at this and said, "You are too small to help me anyway. You can go." A few days later, the lion was walking in jungle. He found himself caught in a hunter's set. He roared loudly, but he failed. The lion was pleading for "Help me, help me." The mouse was the noir and ran to the lion and said, "Don't worry, my friend, I have saved the mouse." Great all his friends and told them, "We all have to help my friend set him free." The mouse and his friend cute through the net and set the thanked the mouse. From that day, they become the best of friends. Moral: a friend, a need is a friend indeed. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Kundan. आपने बहुत अच्छा बोला. You did very, very well. Thank you so much for coming on the screen and sharing this story with us. Next online is Anamika. Thank you, Kundan. Anamika, beta, are you there? आप हैं यहाँ? Screen पर आइए, please. Yes, sir. एक मिनट. सर 1 सेकेंड. 2 सेकंड ले लीजिए, कोई बात नहीं. लाइट ऑन कर. आपका वेट कर रहे हैं. अनामिका, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बता दीजिए. सर यहाँ पे थोड़ी रोशनी नहीं है. तो अंधेरा है पूरा. आप बोल सकते हैं, अगर कैमरा पे नहीं आए, आप अगर बोलना चाहे सिर्फ बोल सकते हैं, हम सुन लेंगे.
सर बिना कैमरा ऑन किए बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है, हम लोग कोई ऊपर बात बैठे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपना नाम बताइए, किस क्लास में है, और स्टार्ट हो जाए। ओके सर। माय नेम इज अनामिका, आई रीड इन क्लास 8। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मक्खी का लालच। एक बार एक व्यापारी अपने ग्राहक को शहद बेच रहा था, तभी उसके हाथ से अचानक शहद का बर्तन फिसल कर गिर गया। बहुत सा शहद भूमि पर बिखर गया। जितना शहद ऊपर ऊपर से उठाया जा सकता था उतना व्यापारी ने उठा लिया, परंतु कुछ शहद फिर भी जमीन पर गिरा रहा। कुछ ही देर में वहां बहुत सी मक्खियां उस जमीन पर गिरे हुए शहद पर आकर बैठ गई। मीठा मीठा शहद उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वह जल्दी जल्दी उसे चाटने लगी। जब तक उनका पेट भर नहीं गया वह शहद चाटती रही। जब मक्खियों का पेट भर गया और उन्होंने उड़ना चाहा तो वो उड़ ना सकी, क्योंकि उनके पंख शहद में चिपक गए थे। उड़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु फिर भी वह उड़ ना सकी। वह जितना छटपटाती उनके पंख उतने ही चिपकते जाते। उनके सारे शरीर पर शहद लगता जाता। काफी मक्खियां शहद में लोटपट होकर मर गई। बहुत सी मक्खियां पंख चिपकने से झटपटा रही थी, परंतु तब भी नई मक्खियां शहद के लालच में वहां आती और मरी और झटपटा रही मक्खियों को देखकर भी शहद का लालच नहीं छोड़ पा रही थी। तभी ये देख के मक्खियों की ये दुर्गति और मूर्खता देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं वे इन मक्खियों के समान ही मूर्ख होते हैं। स्वाद की थोड़ी देर के सुख उठाने के लालच में वह अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर जाते हैं, रोगी बनकर तड़पते हैं और जल्द ही मर जाते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अनामिका। अब लास्ट में एक प्यारी सी बच्ची है निशा, क्लास 9 की, जो पोएम सुनाना चाहती है। निशा, आप रेडी हैं? आइए बेटा। Hello everyone, my name is Nisha. I read class 9. I will be going to tell poem by Survina Bharti. Wine come too softly, don't break the shutter of the window. Wine scatter the papers, don't throw down the books on shelf. The look what you did, you throw them all down. You tore the pages of book, you brought ran again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail climbing hood, climbing doors, climbing house, climbing wood, climbing body, climbing house, climbing lives, climbing heart. In the wine, God, vino, and crushed them all. He wanted do what you tell him. So come, let build strong homes. Let's join the those family. Practice to firm the body. Make the heart stay fast. Do this, and the wood wine will be friends with us. The wine blow out big fire. He make strong fire and roar and flourish. His friendship is good. Be praises him every day. Thank you. Thank you, dear Nisha. हेलो मैम। हाँ जी मैम आई एम स्वाति। मैम यहाँ ना अंधेरा हो रहा है इसलिए हमारा फेस नहीं आ पा रहा। मैम हम आपको, आपकी टर्न आई थी बेटा? यस मैम, मैम हमारी बारी आई थी, बट मैम हम आपसे बोल रहे हैं कि मैम हमने हिंदी में भी एक पोएम बहुत अच्छी याद कर दी, बट मैम ने बोला था कि इंग्लिश में सुनाना है, तो मैम ये सब हिंदी में सुना रहे थे, तो मैम हमारा भी मन करा कि हम हिंदी में सुनाना चाहते हैं। प्लीज मैम हम सुना सकते चलो हैं? आप फटाफट सुना दो, आपको सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। यस मैम, तो मैम हम सुनाने जा रहे हैं। माय नेम इज स्वाति, आई लिव इन दिल्ली। मैं पोएम सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है माँ का प्यार। एक गांव में एक माँ का एक लौता बेटा होता है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है।
तो ऐसे गांव में मेला लगता है, तो वो बेटा जिद कर बैठता है कि माँ मुझे मेले में जाना है। तो बेटा कहता है माँ कहती है कि बेटा अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, तू मेला में नहीं जा सकता, तू खो जाएगा वहां पे जाएगा तो बेटा जिद कर देता है कि माँ मुझे वहां जाना है तो जाना है। तो माँ उसकी जिद के सामने कुछ नहीं बोल पाती। तो फिर अगले दिन उसे मेले में लेके जाती है अच्छे से तैयार करके। तो फिर वहाँ उसका बेटा कहता है माँ मुझे झूले पे झूलना है, माँ मुझे झूले पे झूलना है। तो बेटा माँ कहती है ठीक है बेटे। तो वो जैसे टिकट कटवाने जाती है, बेटे से उसका हाथ छूट जाता है, तो वो उस भीड़ में खो जाता है। वहां पे एक औरत होती है जो कि बहुत ही बुरे मन की होती है, वो उसके बेटे को चुरा लेती है। तो उसकी माँ बहुत रोती है कि मेरा बेटा खो गया, मेरा बेटा खो गया। तो उसका पति जो होता है वो बहुत नेक दिल का होता है, तो अपनी पत्नी को समझाता है कि कोई नहीं, चिंता मत कर, हमारा बेटा मिल जाएगा। तो फिर वो अपने घर जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, बट उसका बेटा नहीं मिलता। 1 साल हो जाते हैं और फिर वही मेला अगले दिन आने वाला होता है। वो पूरे मन से जाती है कि आज मेरा बेटा मिल ही जाएगा मेरे को। तो वो उसी मेले में दोबारा जाती है और भगवान ऐसा करिश्मा दिखाते हैं कि वो औरत जो होती है जो उसके बेटे को चुरा लेती है, वो उस मेले में उसको दोबारा लेके आती है। और वो माँ, असली माँ, अपने बेटे को देख के पहचान जाती है और वो छिल लेती है उससे, कहती है मेरा बेटा है। और जो नकली माँ होती है वो कहती है मेरा बेटा है। तो ऐसे करते करते लड़ाई हो जाती है उन दोनों के बीच। तो वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो फिर ये होता है, तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो वो कहते हैं क्या हुआ, तो पुलिस को वो पूरी बात बताते हैं। तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर वो बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो वो लोग अपना अपना एक एक वकील ले लेते हैं। तो फिर जब जज साहब उनकी बात सुनते हैं, तो जज साहब भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा केस आज तक नहीं आया। तो फिर जज साहब उनकी पूरी बात सुनते हैं। जो नकली माँ होती है वो लेट आती है और जो असली माँ होती है वो जल्दी आती है। तो फिर जो वकील, वो जज होता है, वो कहता है कि ऐसा करो, इनके बेटे के 2 टुकड़े कर दो, आधा इसकी गोद में दे दो और आधा इसकी गोद में दे दो। तो जो नकली माँ होती है वो कहती है जल्दी से टुकड़े कर दो, और जो असली माँ होती है वो कहती है मेरे बेटे के टुकड़े मत करो, चाहे तो इस बांझ की झोली भर दो, बट मेरे बेटे के टुकड़े मत करो, क्योंकि मैं अपने दिल से भी ज्यादा अपने बेटे से प्यार करती हूँ, तो प्लीज इसको मत मारो, इस बांझ को मेरा बेटा दे दो। तो फिर ऐसे ही जज साहब को समझ में आ जाता है कि ये किसका बेटा है। तो जज साहब कहते हैं कि जज साहब, जो नकली माँ होती है उसको 6 साल के लिए जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और असली माँ को अपना बेटा मिल जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मतलब आप जितना भी सच्चाई छुपा लो वो कभी भी नहीं छुप सकती, और कागज का फूल जितना भी बना लो और उससे खुशबू नहीं आ सकती। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सभी बच्चों ने किया। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सर्टिफिकेट्स हम सर्टिफिकेट्स देंगे सभी बच्चों को, उसके लिए उनका ईमेल आईडी आप हमारे से शेयर कर लीजिए। जिन बच्चों के पास नहीं, जिन बच्चों ने हमें शेयर कर दिया है उनको पहुंच जाएगा, और जिनका नहीं है वो हमें प्लीज भेज दें। अब आप जैसे देख सकते हैं मेरी प्यारी नीस मेरे साथ आ चुकी है, तो मैं अनिल जी को कहूंगी कि अनिल जी आप प्लीज रैप अप करिए। और सब बच्चों को सुन के बहुत 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 अच्छा लगा, और दिया जो कोऑर्डिनेटर है आज की, उनको भी एक बहुत मन से बहुत आभार कि आपने इतना बच्चों को समय दिया और यहाँ तक लेकर आए। अनिल जी प्लीज टेक ओवर। Thank you, Mansi. I would like to thank everybody associated with this wonderful initiative. Other people who are not on the screen, who are working from behind the screen, coordinating all the things. Thank you so much for conducting this and making it a success. Or thank you, Dia, for also being in constant touch and arranging all the children. और सबसे ज़्यादा thank you बच्चों को जो आए स्टेज पे और इतनी अच्छी तरह से बोला, हम सारे इतने खुश हो गए उनको सुन के। उनके लिए उनकी तरफ से मैं थैंक यू बोलता हूँ कि वो आए स्टेज पर और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनको सुन सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये सेशन अब
यहाँ क्लोज करते हैं. Thank you so much. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. सर आपसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा. चलो, वो तो बहुत अच्छी बात है. हमें भी अच्छा लगा. बाय सर. आप सब बहुत अच्छे हो. आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा. बाय सर. Bye. Thank you. Sweet, take the stage from here. Yeah. So Anil and Have a good day, sir. Thank you. Same to you. Welcome, ma'am. Welcome, sir. Bye, sir. so Mansi and Anil, thank you so much for like conducting these kids, and also thank you to Diya like who prepared these kids and like conducted this all. It was amazing session with these kids, and like अगर कुछ बच्चे मुझे अभी भी सुन रहे हैं तो like I want to tell them कि शायद जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर या काफी सारी चीजें जो हम बचपन से भूल गए थे वो सब आपने हमको आज वापस सिखा दिया. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. While with this, I will be like closing the session for today. I would like to thank all my like fellow speakers, panelists, and the authors. And I would also like to thank the team of Phoenix Literature Festival, like who helped me like in conducting this session. So with this, I will be closing this session officially. Thank you. Have a good day.